Hi everyone, welcome back to a new episode from DGMZ. I think the camera is a little crooked. Okay. So, to all the returning viewers, we are so glad you could join us. Always happy to have you back with us. And for the new viewers, welcome to the podcast for the first time. I'm very happy that you decided to explore the podcast. As always, for the new viewers, my strong recommendation would be to access the introduction to DGMZ episode because that gives you a good insight into the background and the inspiration behind this podcast. Also, for your awareness, we have two playlists running currently. One playlist consists of these weekend episodes where we get into one ghazal at a time from Diwan-e-Ghalib. And I share the personal impressions around it, my personal impressions around it. And the second playlist is not about the ghazal impressions but other topics. Still focused around Urdu poetry, still about Mirza, but not the ghazal impressions. So do explore the episodes in both the playlists and feel free to access whichever episode appeals to you. Lastly, if you enjoy the content, humble request for you to please click like. If you want to know about the new episodes as and when they get posted, get notified about them, do click subscribe. And if you know a fellow Ghalib fan or anybody who would enjoy this podcast, it would be very helpful if you could share the content via your social media. It just allows this content to reach further beyond its current viewers and subscribers. For everybody who has subscribed so far, thank you so much. Our subscriber count is ticking slowly, but it is ticking, and I have you to thank for that. So thank you so much. Now, today's episode is a continuation episode for Ghazal 13. सो इस गज़ल में 7 शेर थे. पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 4 कवर किए थे और आज हम लोग बाकी 3 कवर करेंगे और गज़ल कंप्लीट हो जाएगी. सो लास्ट एपिसोड में मैंने पूरी गज़ल पढ़ी थी. आज के एपिसोड में पूरी गज़ल नहीं पढ़ेंगे, बट वो जो 3 शेर हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे उनको डेफिनेटली मैं फिर से पढ़ूँगी फॉर आवर रेफरेंस. इफ़ यू वांट टू स्टॉप एट दिस पॉइंट इन टाइम, गो एंड एक्सेस द प्रीवियस एपिसोड, get the first 4 share done and then come back to this episode. Feel free to do that. Otherwise, if you've already accessed the previous episode, you're welcome to continue with me as I get into the impressions of these 3 share. So, as always, let me read तीनों शेर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद we'll get into the impressions one by one. So this is how it goes. है बस की जोश-ए-बादा से शीशे उछल रहे. है बस की जोश-ए-बादा से शीशे उछल रहे. हर गोशा-ए-बिसात है शर शीशा-बाज का. काविश का दिल करे है तकाज़ा की है हनोज. काविश का दिल करे है कि तकाज़ा की है हनोज. नाखूं पे कर्ज इस गिरह-ए-नीम-बाज का. मक्ता अर्ज़ किया है. तराज़े काविश गमे हिजरा हुआ असद. तराज़े काविश गमे हिजरा हुआ असद. सीना की था दफीना गहरा-ए-राज का. So as always, Ghalib will end at a crescendo. लास्ट 4 शेर में जो पहले शेर थे प्रीवियस एपिसोड में जो हम लोगों ने कवर किए थे उसमें बढ़ रहा है इंटेंसिटी as Ghalib is transcending from
the pain, grief, and sorrow of unrequited love to almost the next stage of where he is seeing the beloved now opting for someone else. वो गम एक अलग ही टाइप का है. वो गम, वो तकलीफ एक अलग लेवल की है. So sure, unrequited love hurts. That she doesn't love me the way I love her. वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गम है. बट अब धीरे धीरे ये गम नेक्स्ट लेवल हिट करेगा. Where she doesn't love me and now she's loving someone else. And ये जो 3 शेर हैं, ये उस गम का क्रेसेंडो है, उस गम की पीक हैं. So let's get into the first one. है बस की जोश-ए-बादा से शीशे उछल रहे, हर गोशा-ए-बिसात है सर शीशा-बाज का. So approximate translation is that in this tavern, right, mekhana, I can see, I can almost visualize and see these glasses and bottles of wine jumping up and down because of the intoxication of their content. So the intoxication of the alcohol in them is making the bottle and the cup also get heady and intoxicated. Forget about the ones who are drinking it. And in the second line he says that it's almost that as if the whole floor of this tavern from corner to corner is like a head of a juggler who juggles bottles. And like I always say, his power of observation was so astute and his power of imagination was so vivid. And जब आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते थे तो एक अलग ही लेवल का विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस करने को मिलता है. ये गालिब की अगेन वन ऑफ हिज यूनिक क्वालिटीज़ कि वो ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन को इतनी प्यारी तरह मिक्स करते थे कि एक बिल्कुल अलग ही लेवल का विजुअलाइजेशन मिलता था जो सिंपली एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन या सिंपली विविड इमेजिनेशन से आप अचीव नहीं कर सकते. But when you combine it, and when Ghalib combines it, it's a different experience altogether. So the way it is coming across to me is that पहले 4 शेर में इतना गम, इतना दुख, इतना तकलीफ drove him to the only place that gives some kind of respite and relief to him, the mekhana. So जब गम इस हद से गुज़र रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको एलिविएट करने के लिए. एंड दैट इज़ वेयर दिस कपलेट कम्स इन प्ले, और सो इज़ माई अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज़ ये कपलेट बाकी पूरी गज़ल की थीम से थोड़ा अलग है. इट इज़ टिकिंग आउट. बट आई थिंक इस कपलेट में गालिब जो कैप्चर करना चाह रहे हैं वो ये बात है कि हाँ, पहुंच गया हूँ मैं खाना. एंड जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं मैं खाने को, क्लियरली ही इज़ हैड इनफ टू ड्रिंक, राइट. बिकॉज उनका डिस्क्रिप्शन है कि मुझको ऐसा लग रहा है कि इस मैखाने में जो बोतलें हैं मैं की, जो ग्लासेस हैं मैं के, वो भी उछल रहे हैं, अपने आप उछल रहे हैं. दे आर जंपिंग ऑफ द ग्राउंड और वेर एवर दे आर प्लेस्ड. they are doing these movements, right, which
they are not supposed to do. They are supposed to sit still, containing the liquor in them. But आज कुछ ऐसा समा है कि शराब का जो नशा है वो सिर्फ जो पी रहे हैं उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है, बट इवन बॉटल्स एंड ग्लासेस जिसमें वो कंटेन्ड है उनको भी इफ़ेक्ट कर रहा है. और मैं ये सब देख रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो पी रहे हैं वो ही नहीं सिर्फ लड़खड़ा रहे हैं या बट ये बोतलें और ये ग्लासेस भी लड़खड़ा रहे हैं, जंप कर रहे हैं. एंड देन ही सेज दैट अगर पूरा एक बर्ड्स आई व्यू में लेता हूँ इस कमरे का या इस टैवर्न का, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पूरा फर्श है इस टैवर्न का, ये जो पूरी फ्लोर है इस टैवर्न की, मानो कि ये एक जगलर का सर है, हेड ऑफ अ जगलर. नाउ लाइक आई से द ऑब्जर्वेशन, द डिटेल, ये 2 लाइनों में ये पूरी कहानी कैप्चर करना मतलब सो वो कह रहे हैं कि सर है जगलर का, एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन द हेड ऑफ द जगलर और द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द जगलर. व्हाट डू यू सी देयर? All the items he is juggling, right? Because all his act happens above the head, right? He keeps all the balls up in the air, literally and figuratively, right? So वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लोर है ये एक जगलर का सर है, और कोई जगलर है जो कि ये सारी बॉटल्स और ये सारे ग्लासेस फुल ऑफ अल्कोहल को जगल कर रहा है. अब लिटरली तो बहुत सिंपल मीनिंग है कि सब लड़खड़ा रहे हैं. गालिब खुद लड़खड़ा रहे होंगे, खुद काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड होंगे कि उनको ऐसा लग रहा है कि बोतलें और शीशे उछल रहे हैं. मेटाफोरिकली अगर आप सोचें तो कोई तो है जो इस केओस को कोऑर्डिनेट कर रहा है. देयर इज़ अ व्हाट इज़ दैट वर्ड आई एम लुकिंग फॉर? देयर इज़ अ what is that phrase? It's eluding me. There is a reason to madness. No, there is a I will not try to remember it. Give me 2 seconds more. If I don't, we'll give it up. Yes, there's a sense to this madness, or there is a logic to this madness, there is a logic to this chaos, right? So there is somebody, metaphorically it seems, who amidst all this chaos and confusion is keeping everything up in the air, not letting it drop. And लगता है कि Ghalib had to juggle a lot of things, lot of grief, lot of pain, lot of sorrow, and not let it completely engulf him, right? Destroy him, finish him. So कुछ वैसी फीलिंग भी आती है. बट लिटरल जो वो कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी क्लियर है कि लिटरली वो जो बता रहे हैं इस शेर में इज़ द सीन ऑफ अ टैवर्न, जहाँ पे everybody is so intoxicated and Ghalib coming to the tavern was never a party, right? Ghalib coming to the tavern was always preceded by some episode, some event that just made the grief and pain reach a limit where probably he needed some respite, some solace, some relief from it. And that's why he would try to get that at the tavern. So yeah, डिस्क्रिप्शन से तो ऐसा ही लग रहा है कि गालिब बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस टैवर्न का नज़ारा, एंड सब इंटॉक्सिकेटेड हैं, सब लड़खड़ा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शीशे की बोतलें और शीशे के जो ग्लास हैं
the goblets and the bottles of wine are also intoxicated tonight. They are also heady because of the liquid they hold and contain. Moving on to the next sher. काविश का दिल करे है तकाजा की है हनोज, नाखूं पे कर्ज इस गिरह-ए-नीम-बाज का. सो ये भी बहुत प्यारा शेर है. काविश का दिल करे है कि तकाजा की है हनोज. सो बेसिकली व्हाट गालिब इज ट्राइंग टू से इज दैट my heart, which is full of grief, which is full of sorrow, which is full of pain, is like this knot. It's like this knot. And this knot of a heart, or this knot of my heart, demands to be untied. It demands release. It demands untangling, because the knot over time has become so convoluted, so complex, so hardened that it's painful. Heart is supposed to be this nice little spongy, soft thing, full of life, full of dreams, full of desires, wishes, blood pumping through it, right? But Ghalib feels his heart as this tight, relentless knot that keeps getting more convoluted, more complex, more hardened over time. And here Ghalib is saying that this knot of my heart still demands, continues to demand, insists on untying, on a resolution, on a relief. And who is the knot requesting this relief from? Nails. And again, observation, detail. बात तो ये बड़ी सिंपल है कि आप हर गांठ को नाखून से ही खोलते हैं. You pry it open with your nails. It's a very simple thing. We all do it. We untie the knot with our nails. But अब वही सिंपल बात को यहाँ पे जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, वो एक अलग ही लेवल का विजुअलाइजेशन है. सो इमेजिन आपको ये करना है कि दिल की ये जो गांठ है, ये दिल ही गांठ बन गया है, राइट? ये दिल ही गांठ बन गया है. और अब आप नाखून इस्तेमाल करेंगे इसको खोलने के लिए. अब ये रस्सी तो है नहीं, ये तो दिल है. अब इस पे जब आप नाखून चलाएंगे तो गांठ तो खुलेगी, पर ऐसा नहीं है कि बस गांठ ही खुलेगी. पैरेलल में ये नाखून जो हैं ये इस दिल रूपी गांठ में डिग करेंगे, उसको और लहूलुहान करेंगे, उसको और ज़ख्म पहुंचाएंगे. तो वो जो एक टिपिकल पेन रिलीफ का कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसे सिंपल एग्जांपल दिया, इच. अगर आपको कहीं इच हो रही है तो वो करने में एक तकलीफ़ भी है और एक रिलीफ भी है. पेन प्लेजर गो हैंड इन हैंड, राइट? सो बिल्कुल वैसा है कि गांठ खोलूँगा मैं. ये जो दिल एक गांठ बन गया है, दिस हार्ट दैट हैज़ बिकम अ नॉट, I will untie it, or it is requesting to be untied, and the request is being made to the nails, because usually nails are what is used to untie the knot or any knot. But what, as a viewer,
or as a reader you have to understand is, when these nails are going to dig into that heart that has become a knot, though they will untie the knot, they will in the process dig and claw at that heart even more, injure it even more, cut into it even more, graze on its tissue more. So relief आएगा but at a price. Not khulegi but at a price. And that's the visualization that comes to mind, that my heart is sending out this request to nails. My heart is sending out a request to my nails to come over and dig into it and untie this knot. Yes, I know that when that will happen, it will hurt. It will hurt. Because these nails are not only going to untie the knot, they are going to injure the heart even more in that process. तो यानी तकलीफ से छुटकारा मिल तो सकता है, बट तकलीफ थोड़ी और सहनी पड़ेगी. तकलीफ का सलूशन तकलीफ है. you will be able to resolve the pain of this knot by the pain of these nails digging into your heart. Now, if that's what you want, then go for it. But the relief is in the pain of these nails digging in the heart. Moving on to the last शेर, मक्ता. तराज़े कविशे गमे हिजरा हुआ असद, सीना की था दफीना घोराए-राज का. So the approximate translation is that Asad, Ghalib का दूसरा पेन नेम. And that reminds me, एक बहुत प्यारा एपिसोड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था असद पे, वो दूसरी प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो उसे एक्सेस कर सकते हैं. I think you will enjoy it. So तराज़ाए कविशे गमे हिजरा हुआ असद. So what Ghalib is trying to say here is that Asad, me, I have been plundered and looted. I have been plundered and looted by this sorrow of separation. This sorrow of separation has plundered and looted me. Of what? That's what's in the second line. सीना की था दफीना Girah-e-Niim-Baaz का. Sina is chest, by extension heart. Dafina is literally it's an archaeological site or a buried treasure, a buried fortune, a buried artifact from long past, right? And then Raaz is secrets. So शेर बहुत प्यारा है, शेर बहुत प्यारा है. and मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जैसे मैं कहती हूँ हर शेर का एक सेंटर पीस होता है, इस शेर का सेंटर पीस राज है, in my understanding. So let's get into the impression. So in the first line there's this expression of वो जैसे एक हम लोगों का तकिया कलाम होता ना, लुट गए, बर्बाद हो गए, बिल्कुल वैसा फीलिंग आता है पहली लाइन में कि तराज़े कविशे गमे हिजरा हुआ असद. So taraz is plunder, ruin, looting of something, right? And kavish is effort. We had that word in the previous share also. And gam-e hijra, gam is sorrow, hijra is separation.
So Ghalib is saying that I have been looted, I have been plundered, I have been ruined by this sorrow of separation. Separation from the beloved. I have been razed to ground. Nothing is left. Nothing is left but because of the sorrow of separation. And then in the second line he says, otherwise, this heart of mine, this chest of mine was a treasure trove buried deep, right? It was a treasure chest or a treasure trove which was buried deep in the ground, full of pearls. Gauhar is pearls, gems, actually pearls. Full of pearls. And pearls of what? Pearls of secrets. So, इस सीने में, इस दिल में बहुत ही कीमती, बेशकीमती राज छुपे हुए थे, दबे हुए थे, बिल्कुल नीचे, सेफ. एंड ये सारे राज ऑफ कोर्स बिलवेड के थे, उनसे प्यार के थे, वो जो उनसे ख्वाहिशें थीं, कभी अगर उनसे कभी कोई मुलाकात बात हुई होगी या दूर से ही कुछ देखा होगा, वो यादें, वो सारी चीज़ें गालिब इक्वेट कर रहे हैं पर्ल से और कह रहे हैं कि हमने तो ये दबा के रखे थे सीने में, एकदम जैसे कोई बहुत अपना कीमती ख़जाना दबा के रखता है सेफ कीपिंग के लिए. बट इस गम ने आकर ये हाल कर दिया कि लूट लिया मुझे बिल्कुल. सारे मेरे राज खुल गए हैं आज. मेटाफोरिकली व्हाट ही इज सेइंग इज सारे राज खुल गए आज. इस गम ने मानो जैसे इस दिल को फाड़ दिया. मैं इस दिल को इंटैक्ट नहीं रख पाया. दरवाजे खुल गए और पूरी दुनिया अब ये राज देखती है. Everybody can see because the doors of these treasure chests have been opened because the sorrow came and just looted and plundered all the safekeeping I had done to keep these secrets just for me, myself, hidden, buried, safe. वो सब ख़त्म हो गया. इस गम ने ये हाल कर दिया कि दिल एकदम गम से फट गया और खुल गया और अब सब लुट गया. सब मतलब सीक्रेट रहा ही नहीं ना. पर्ल तो सीक्रेट का था, अब ये बात खुलेआम सबको पता चल गई है कि क्या है मेरे दिल में. सो अगेन इतना डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कोई लुटेरा आया, उसने एक सीक्रेट जगह को एक्सेस किया और उस सीक्रेट जगह में जितनी भी बेशकीमती चीज़ें थीं उनको निकाल के ले गया. अब वो सीक्रेट जगह खाली है, लुटी है, बर्बाद है. तो बिल्कुल वैसे ही पिक्चराइज़ कर रहे हैं कि मेरा दिल था, उसमें सब मेरे सारे सीक्रेट्स थे, उनको मैंने बखूबी दबा के छुपा के सेफली रखा था. पर ये गम का जो लुटेरा आया, ये दुख का जो लुटेरा आया, इसके सामने मैं खड़ा नहीं हो पाया. इसने आके दिल के सारे सेफ कीपिंग जो भी गार्ड्स मैंने लगाए थे वो सब तोड़ के लूट लिया, सब कुछ जो था इस दिल में. एंड गम का लूटना मतलब ये है कि मार डाला, हर एक इच्छा को, हर एक ख्वाहिश को, हर एक ख्वाब को मार डाला, ख़त्म कर दिया. क्योंकि गम तो ऐसे ही लूटेगा आपको. गम क्या लूटेगा? खुशियाँ. तो जो सारी चीज़ें थीं जिनको सोच सोच के खुशी होती थी, जिनको सोच सोच के राहत मिलती थी, जिनको सोच सोच के उम्मीद बनती थी, जिनको सोच सोच के जिया जाता था मेरे से, मेरे जीने का जो सहारा था,
खुशी तो बहुत बड़ी बात है। दुख में जो मेरे जीने का सहारा था, वो चीज़ें इस गम ने मार दी। इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना डिसइल्यूजनमेंट मेरे तरफ भेजा है कि जैसे एक लुटेरा ख़त्म कर देता है, वैसे इस गम ने सब ख़त्म कर दिया। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। And like I said, राज being the centerpiece. So इस शेर में तो इतना उभर के नहीं आता है, बट हम लोगों ने बाकी गज़लों में देखा है कि अपने बिलवेड से रिलेटेड बातों को एक राज रखना, एक सीक्रेट रखना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, एक बहुत बड़ा एंडेवर था जो कि गालिब बार बार एक्सप्रेस करते हैं। एंड सिर्फ गालिब ही नहीं, उर्दू पोइट्री में बहुत लोग एक्सप्रेस करते हैं। ये जो दिल का जलना और दिल का ख़त्म होना होता है, मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ होल्डिंग इन ऑल दीज इमोशंस एंड फीलिंग्स। बोलने का नहीं, सब दबा के रखने का, अपने अंदर पीते चले जाने का, ना बिलवेड से बोलने का, ना ज़माने से बोलने का, कभी कभी तो अपने आप से भी नहीं बोलने का, एडमिट ही नहीं करने का। बस एक अपने दिल में इनको दबा के रखते जाना है। एंड ये चीज़ें दबा दबा के जो रखी जाती हैं, यही दिल को अंदर से फिर खाने लगती हैं, जलाने लगती हैं, खोखला करने लगती हैं। बट यही स्टाइल है, यही स्टाइल है आशिकों का, यही स्टाइल है गालिब का, यही स्टाइल है उर्दू पोइट्री में, जो कि काफ़ी talked about है। तो connected to that, let me quote some shares here. ये शेर फैज़ अहमद फैज़ का है। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया। So the approximate translation is that I have tried hiding this secret of my love and passion for someone, right? And in that, I have experienced the burning down of my heart. So ये जब छुपाए जाते हैं राज और बताए नहीं जाते हैं, तो फिर ये दिल को जलाते हैं, दिल को खोखला करते हैं। एक और शेर मजरू सुल्तानपुरी का, हाले दिल मुझसे ना पूछो, मेरी नज़रें देखो, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। वही बात ना। द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज, डोंट आस्क मी टू वोकलाइज माई स्टेट, लुक एट माई आईज। Don't ask me to vocalize my state or put it in verse, just look at my eyes. After all, the secrets of the heart are always expressed through eyes. Basically, you don't say them. You keep them buried. अब समझने वाले आपकी निगाहों से समझ लें तो समझ लें, पर आप बोलते तो नहीं हैं उसके बारे में कुछ। एक और शेर असरारुल हक मुजाज का, दफन कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ मैं। सेम थीम बट अ लिटिल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सो बेसिकली द अप्रॉक्सीमेट ट्रांसलेशन इज, beloved, if you want, I can bury this secret of you or my feelings for you deep down in my heart, and if you want, I can make a love story out of it that will be told for generations to come. तो ये सारी सीक्रेसी लवर के बेनिफिट के लिए नहीं होती है, बिलवेड के बेनिफिट के लिए होती है। उनकी बदनामी ना हो, उनका नाम गलत तरीके से लोग ना लें, इस प्यार को लोग गलत तरीके से इसके बारे में बात ना करें, उनकी हया, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रेपुटेशन को मद्देनज़र रखते हुए
इन सब चीज़ों को दबा दें। और या फिर कभी कभी ऑफ कोर्स बिलवेड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं तो फिर दबा दें। तो इस शेर में लवर इज़ वेरी वेरी नाइसली एंड क्लियरली सेइंग चॉइस इज़ योर्स। तुम चाहोगी तो ये एक ऐसा सीक्रेट बन जाएगा, ये जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, अगर तुम चाहोगी तो ये एक ऐसा सीक्रेट बन जाएगा जो शायद मैं अपने आप से भी छुपा के कहीं डीप दबा दूंगा अपने दिल में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट अगर तुम चाहोगी तो ये एक ऐसा अफसाना बन जाएगा कि प्रॉब्ली हमारे बाद भी चलता रहेगा, हमारे जाने के बाद भी लोग इसकी बातें करेंगे। चॉइस आपकी है, क्या चाहती हो मैं करूं इस प्यार का। एंड लास्ट शेर आलमा इकबाल का, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में। So the approximate translation is that wherever it is hidden or unseen, right, wherever it is hidden or unseen, or sometimes it is hidden and unseen under the veil of a mere color, right, एंड बात ब्लड की हो रही है कि आप ब्लड को कैमोफ्लाज कर सकते हो एज अ मियर कलर, राइट, बट रिमेंबर दैट दिस इज़ ब्लड एंड इट runs, it has the ability to run in the veins of stone. सो स्टोन की ये जो एक खासियत है, राइट, कि उसके कलेजे में एक आग होती है। एंड हम लोगों को तो पता है कि पुराने ज़माने में 2 स्टोन्स को आप रब करेंगे तो फायर, वही तरीका था, वही मैच स्टिक था उस ज़माने का। सो एवरी स्टोन हैज़ अ फायर इन इट एंड that fire runs in the veins of the stone just like blood. So सिर्फ दबाने की बात हो रही है कि आप अगर स्टोन को बाहर से देखेंगे तो क्या आपको लगेगा कभी कि ये आग लगा सकता है, कि इसकी रगों में आग दौड़ रही है? आप तो when you see a stone, it is something dead. It will not respond, it doesn't change, it is what it is, it's dead. Can you even imagine when you look at the stone that in its veins, just like blood, runs fire? वो एक एपिसोड में, मुझे इस वक्त एपिसोड का याद नहीं आ रहा है, कबीर का एक दोहा था कि एक उत्तम आदमी से प्यार करना, या एक उत्तम आदमी का प्यार उस पत्थर की तरह है जिसको आप हज़ारों साल पानी में डुबोए रखें और फिर निकालेंगे तो उसके अंदर की आग बरकरार रहेगी, क्योंकि ये आग लहू की तरह पत्थर में दौड़ती है। सो बेसिकली बाहर से देख के आपको शायद कुछ पता ना चले, बट अंदर ये एक बहुत बड़ा राज, आग का राज पत्थर अपने सीने में दफन रखता है। सो वही, जैसे कि यहाँ पे भी राज की बात हो रही है कि बाहर से नहीं पता चलेगा, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, बट अंदर तो एक आग जैसा राज दबा के पत्थर की तरह रख सकता हूँ। इस शेर में वही बात कहना चाह रहे थे। सो या आई थिंक गालिब का इस लास्ट शेर में गम ये है कि उनका जो बिलवेड, उनका जो मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर ट्रोव था ऑफ सीक्रेट्स विद रेफरेंस टू हिज बिलवेड, इस गम ने उनको इस कदर मजबूर कर दिया है, इस तरह से लूट लिया है कि वो ट्रेजर ट्रोव भी नहीं रहा। कोई सारी उम्मीदें लूट ली हैं, सारे ख्वाब लूट लिए हैं, सारी ख्वाहिशें लूट ली हैं,
और यही गालिब का ख़जाना था, यही गालिब की प्रेशियस चीज़ें थी। और एंड इसी गज़ल में हम लोगों का वो जो है ना एक शेर, ये बिल्कुल उसी के साथ जाता है। मैं बताती हूँ आपको कौन सा शेर है वो। प्रॉबली इसमें नहीं था, शायद किसी और गज़ल में था, जहाँ वो स्लो ब्लीडिंग ऑफ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, राइट, स्लो डेथ। तो वही कर रहा है ये गम, धीरे धीरे एक एक ख्वाहिश, एक एक आरजू लूट रहा है, ख़त्म कर रहा है उसको। एनीवे ये तो एक ऐसा टॉपिक है, इस पे वन कैन गो ऑन एंड ऑन, बट द इम्प्रेशन स्टॉप्स हियर. This is what this couplet means, and this brings us to the end of Ghazal 13. We have finished the Ghazal. In the next episode, we will get into 14. I do hope you enjoyed the impressions so far of this Ghazal, and if you do, and if you did, please click like. And that would be very encouraging. Until I get back in the next episode, love and light, everyone. Thanks for watching.